So we were talking about the sale of assets. We talked about two things in that. One was when we are having the receipt and payment account showing us the sale of asset, we are being given in the opening balance sheet the value of opening assets and depreciation on that. Now let's observe the things further. Scene 3. If it is given something like this, if this is my opening balance sheet, and this opening balance sheet shows assets of, let's say, 5 lakh. All right. Scene 3 है या 4 है? Oh, I'm sorry, scene 4. My bad. Asset 5 lakh. And then in my receipt and payment account, I've been given, this is my receipt and payment account, sale of asset rupees, say 2 lakh, book value rupees 1,80,000, correct? And then onto the credit side, I have given asset purchase rupees 2,50,000 into bracket 1st October 2019. Let's say we are doing it for 1920. And then additional information provided to me is, additional info that is given to me is, depreciation is charged on assets, at 10% per annum on WDV basis, right? And the asset sale date is not provided to us. When asset sale date is not provided to us, we presume what? That asset is sold on the first date of the year itself or not? Yes or no? Now, in this case, in these kind of questions, if at all it comes in the examination, I would always suggest that you should be preparing a separate working note for the asset account. Working note 1, you'll need 2 working notes in this. Why? Because there is this asset account also, and as well as you'll be requiring a working note for depreciation calculation as well. Right. Asset account. On to the debit side, to balance brought down. Rupees 5 petty. Yes or no? Then asset worth rupees 1,80,000 is sold for rupees 2 lakh. Therefore, by bank rupees 2 lakh. But it was having the book. अरे सार्थक, तुम लोग क्या बेवकूफ हो क्या रे? अक्कल नाम की चीज नहीं है तुम में. Am I doing something nonsense in here? बकवास इंसान है यार तू. कंसेप्ट सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, और बंदे को लाइनिंग मारनी है, लाइन मारनी है. अरे क्लास में बैठ के लाइन मारना पागल, ये ऑनलाइन लाइन मार के कुछ नहीं होने वाला है तेरा.
बेवकूफ इंसान. Like seriously, you people don't have the sense. Am I doing the time pass in here? नहीं पढ़ना है, मत आया करना क्लास में. ज्वाइन क्यों किया तूने? So I sold the asset for rupees 2 lakh, but the book value of that asset was 1,80,000, which means there is a profit on sale of asset or not. That profit on sale of asset I need to transfer to what? To the income and expenditure account. Therefore, on to the debit side, I'll write the entry as what? Asset account debit to income and expenditure account. Rupees 20,000. Am I right? Now there is a further purchase. Receipt and payment account shows me that there is an asset purchase of rupees 2,50,000. So of that also I need to pass the entry in my asset account or not. So asset account on to the debit side, I'll have to bank rupees 2,50,000. But mind well, my dear friends, I am not going to charge the depreciation on the remaining 3 lakh plus 2,50,000, 5,50,000 directly. I'm supposed to charge the depreciation on what? Yes, I have passed the entry for profit on sale as a separate one. I can pass the entry as income and expenditure account. I can pass the entry as to profit on sale of asset also account. There is no problem. Either which way it is correct. Right. My working note number 2, depreciation. Arey Baba, profit on sale of asset will go to income and expenditure account only or not, Kshitija? If my profit or loss, चलो ठीक है जाने दो, तुम लोग को वो 12th स्टैंडर्ड वाइज ही बताता हूँ. टू प्रॉफिट ऑन सेल, profit on sale, either which way, ultimate the effect is going to remain in the income and expenditure account only or not. I wrote the entry directly, right? So when I'm charging the depreciation, Kshitija, when I sold the asset for an amount of 2 lakh, having a profit of 20,000, what is the journal entry that you're going to pass for that? Asset account, sorry, bank account debit 2 lakh rupees to asset account 1,80,000 to profit on sale 20,000. This is the combined journal entry for that or not? Ashutosh, am I going right? ये मैंने कंबाइन एंट्री पास की, पर मैं जब असेट अकाउंट में लिखता हूं तो कैन आई राइट इट कंबाइन? I need to write the entries separately or not? So for that purpose, first I wrote the entry for sale of asset, that is bank account debit to asset account 2 lakh rupees. And then because I sold the asset for a profit of 20,000, therefore I passed the further entry as asset account debit to profit on sale or income and expenditure account 20,000. Did you people understand that now? अरे खुशी, तेरे को 2 लाख रुपए आए तो बाय बैंक 1,80,000 कैसे कर सकती तू? तेरे कैश बुक में कितने का एंट्री होगा रे खुशी? When you have sold the asset for 2 lakh rupees, तो तेरे कैश बुक में एंट्री कितने का होगा? 2 लाख रुपए का होगा या 1,80,000 रुपए का होगा? Do not think from the perspective of the journal entry. Do think from the perspective of transaction.
यस और नो? क्योंकि अगर तूने सपोज असेट को अकाउंट डायरेक्ट 1,80,000 का अकाउंटिंग किया होता तो आर यू गोइंग टू डू द अकाउंटिंग ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ कैश इटसेल्फ? You do the accounting of profit on sale of asset after adjusting it in the asset account only or not? If you'd be remembering the provision for depreciation method, if you'd be remembering the asset account, depreciation नाम का एक टॉपिक किया था हमने छोटा सा, शॉर्ट में अगर वो याद आ रहा होगा तो, है ना? हाँ, okay. So now let's talk about the depreciation. First, on balance from opening asset, that is 5 lakh, उसकी वैल्यू कितनी? 5 lakh minus 1,80,000. Why not 2 lakh? Because asset मैंने 2 लाख की नहीं बेची, asset सिर्फ 1,80,000 रुपए की बेची. उसका 10% for the full year I'll be charging the depreciation on that because that asset remained with me for the whole year or not. That is 32,000. And then on new asset, I'll be charging the depreciation only for a period of 6 months. That is 2,50,000 into 10% into 6 upon 12. We are presuming the financial year to be 31st March 2020. Correct or not? So accordingly, the depreciation on that comes to 12,500. So my total depreciation comes to 44,500. Did you people understand this? So how much will be credited to my asset account? By depreciation will be 44,500, and therefore by balance carried down comes to how much? 5 7 7 में से 2 गए 5 5 500 5 25 500 5,25,500. 5,25,500. Is it right? As a closing balance? Yes or no? Now, how will it appear in my final accounts? In my income and expenditure account, I already have the format, so I'll just pick it up. In fact, मेरे पास ये भी है. सारी चीजें हैं तो मैं मेहनत क्यों करूं? In my income and expenditure account, I'll have to depreciation 44,500 and buy profit on sale 20,000. Yes or no? And at the same time, in my balance sheet, I'll not prepare the working note in the balance sheet, that sale, etc., etc. I did it directly in my working notes or not. So in my balance sheet, I'll have asset at what rate? Directly to the outer amount column at rupees 5,25,500. 525,500. Did you people get it? पहले पढ़िएगा concept. Yes or no? हाँ चलो छापो. इसके बाद एक और कंसेप्ट एंड दैट्स इट. बस हो गया. तुम लोग अभी बहुत ज्यादा टाइम पास के मूड में हो. So I won't trouble you a lot.
हमने सेल का डेट दिया होता 1 October 2019, in that case your profit on sale would be calculated at the rate of your profit on sale would have been increased in that case, क्योंकि बुक वैल्यू 1,80,000 था, फिर तुम उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, वो डेप्रिसिएशन माइनस करके जो आपकी अमाउंट आती वो आप सेल वैल्यू से कंपेयर करते हो और फिर आप प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कैलकुलेट करते हैं। यस और नो? यस। In that case, your profit on sale of asset would have been 32,000 and the depreciation would have increased by rupees 18,000. क्वेश्चन ये था, अगर वहां हमें सेल का डेट दिया होता एज 1 October 2019 तो हम क्या करते? In that case, you would have first calculated the depreciation on the asset sold at rupees 9,000. I'm sorry, not 18,000. You would have calculated the depreciation on that asset sold at 9,000. 1,71,000 का asset आपने 2 लाख रुपए में बेचा, तो आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 29,000 हो जाता और आपका डेप्रिसिएशन ऑन असेट 53,500 हो जाता. That would have been the difference in that case. If there would have been the sale of asset, date of sale of asset given. Whatever is the book value given to you, you have to presume it is as on the first date of the year. I don't know, beta. Parth. Depreciation on SLM basis could be asked. Yes, it can. Anything can be asked, beta. How can you have this kind of question? I don't know. अगर depreciation on SLM basis पे पूछा है, तो then in that case they must give the cost of the asset also or not. यहाँ तुमको बताया क्या उसका कॉस्ट क्या है, उसका एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल 2000 कैसे होएगा पार्श्व? Profit on sale in that case will be 29,000 or not? हाँ, अगर कॉस्ट देते तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी देते. मैं इस पॉइंट पे वो अवॉइड कर रहा हूं. इनफैक्ट एनपीओ के क्वेश्चंस में नॉर्मली ऐसा होता है दैट दे गिव यू द कॉस्ट एज वेल, बट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इट फॉर द टाइम बीइंग. जब फाउंडेशन में वापस आ जाओगे तब वो सारी करामातें करेंगे हम लोग. छप गया आपका? ए जल्दी जल्दी छापो रे, मेरे को आगे लेक्चर लेने हैं. तुम लोग को क्या है, तुम लोग को टाइम पास है. होएगा होएगा बेटा, ऑफलाइन फाउंडेशन जरूर होएगा, क्योंकि तब तक वैक्सीन 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 मार्केट में बिक जाएगी.
देखो किसी की क्या डिमांड तो किसी का क्या डिमांड, मास्टर किधर जाएगा। मुझे ना जनरली गुस्सा नहीं आता है। आज हो जाएंगे बेटा, वो मैं आज सुबह कर रहा था, एक्चुअली मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो ड्राफ्ट मोड पे हैं। वो उसमें एक लेक्चर मिस हो रहा था तो आई जस्ट सॉर्टेड दैट आउट। आज आज सारे लेक्चर्स हो जाएंगे। घर पे ही रहेगा रे, घर वाले भी बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। बोलते हैं तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम घर पे ही रहो। नहीं रे बाबा, हो गया। आरबीआई बहुत डिस्कस कर लिया कल हमने, थोड़ा ज्यादा ही डिस्कस कर लिया। तुम ओसीएम ग्रुप पे डाल देना सिर्फ कि आज सेशन नहीं होगा, डायरेक्टली विल हैव द सेशन ऑन संडे। चलो, द लास्ट सिचुएशन बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स break in the foundation lecture. So this is the last lecture of your CA foundation syllabus before your board exams. Once your board exams are over, you need to come back. Let's come on that now. Tomorrow is Saturday, Mrudula. It is GB sir's day, you know. He takes the session on Saturdays, isn't it? Okay. Suppose the will be taking the confidence wala session. I have to take it and I will be taking it, right, before your 12th exams. So suppose you have been given scene 5 as what? As this scene 5, and that is the opening balance sheet has assets 2 lakh. The receipt and payment account has sale of asset. Yeah, I know, मुझे जीबी सर जैसा सपोज नहीं आता है, because GB is GB, you know. I'm MB. Sale of asset is say 30,000. Asset purchase is say rupees 1,50,000. And then you have been given the additional info as to what? Closing balance of asset is rupees 3 lakh. That's it. No further information is given to you. In this case, you're not supposed to do the separate calculation of profit or loss on sale of asset. You're not supposed to calculate the separate amount of depreciation. Whatever is the differential amount, the balancing figure in the asset account will be treated as the depreciation. Right?
कई बार वो स्पोर्ट्स मटेरियल वाली सिचुएशन आती है, राइट? सॉल्यूशन, स्पोर्ट्स मटेरियल वाला जो एग्जांपल आता है ना, उसमें नॉर्मली ये होता है. सो यू प्रिपेयर व्हाट? Asset account. In that asset account, you'll have two balance brought down as कितना था? 2 पेटी. Then for the asset purchased during the year, you'll have two bank rupees 1,50,000, and then you sold the asset as well of 50,000. So on the credit side, you'll have by bank rupees 50,000. And then because in the additional information you have been provided, by balance carried down as rupees 3 lakh. Oh, ये तो मैच हो गया. Suppose this is 30,000. This is 30,000. In this case, the differential amount will directly be put into what? Income and expenditure account. By income and expenditure account, rupees 20,000. That is nothing but a kind of wear and tear loss with reference to what is that bank 50,000 credit on the bank. Prathamesh, I had put it as 30,000. ये sale of asset है आपका. जब आपने asset बेची तो you'll pass the interest bank account, debit asset account or not. That's why onto the credit side you'll have by bank 30,000. Correct? अरे वो 50 का 30 कर दिया ना क्षितिजा. So that 20,000, that's what I said, that when this kind of scenario comes, at that time you're not supposed to calculate. अच्छा 30,000 ही बोला था, ठीक है. You're not supposed to do the calculation of profit or loss on sale of asset. You will continue treating this as the depreciation or loss on sale of asset whatsoever combined. And that's why I directly wrote as what? By income and expenditure account 20,000. Right? So in this case, when I'm preparing my income statement and my balance sheet, in my income and expenditure account, if this is my income and expenditure account, I'll have two asset or two depreciation on asset, whichever way you write, that's correct. Are Shravani, that is not been given to you. What is the book value of the asset is not been provided to you. That's why we are presuming that sale value will account for the depreciation and loss on sale of asset also. Loss, profit on sale of asset, whatsoever it is. So two asset 20,000, or you can write two depreciation on asset 20,000. And then in your balance sheet, closing one, you'll have what? Asset at what value? At the closing value, that is 3 lakh. This is more simpler in fact. If this kind of situation comes, मैंने कहा जब स्पोर्ट्स मटेरियल वाली सिचुएशन आती है नॉर्मली उसमें ऐसा होता है, या फिर बुक्स एंड पीरियोडिकल्स वाली सिचुएशन में ऐसा होता है, लाइब्रेरीज के केस में. By income and expenditure account is depreciation plus profit loss on sale of asset. Yes, correct, Chris, absolutely correct. Shopify, the scene 5. How poetic, how rhythmic. Yes, this one is easier to all other. नहीं रे आर्या, बुक का रट्टा किधर मारेगा, मैं इतना टाइम में पढ़ा है क्या मेरे पास? नॉर्मल जो प्रैक्टिकली मुझे पता है मैं उसके बारे में बताएगा ना. और मुझे पता है मैं क्या क्या सीन बना सकता हूं, वो सारे के सारे सीन तुम्हारे पास आ गया. स्टिल आई कैन मेक 2 or 3 more scenes, but I don't want to create any scene in front of you.
मेरी कविता तुमको सुनाई हुई है ना, तो अब उसके अलावा मेरे को और कोई कविता आती नहीं है। मन की व्याख्या सुनाई है मैंने तुमको। और जीवन किस डगर में भी सुनाई ना। आज चेहरे की रंगत सुनाऊंगा। हाँ, अब इन सब सीन्स को अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे मार्क्स बनेंगे। टुडे विल हैव अ डिफरेंट पोएम, बीइंग द लास्ट सेशन बिफोर योर बोर्ड्स। अभी हम लोग अगले 2 महीने तक नहीं मिलेंगे यार। तुम्हारा चल जाएगा, हम जैसों का कैसे चले। हाँ, दिस इज द लास्ट सेशन बिफोर बोर्ड्स। अरे भाई, आर्या मेरे को घर से तो बाहर निकलने दे, सीगढ़ किधर लेके जा रहे हो। हाँ, मैसेज करते रहना, किसी को कोई क्वेश्चन। फुल स्टॉप नहीं बेटा, पैसा वसूली पॉज। टुमारो देयर इज नो सेशन ऑफ फाउंडेशन। Yeah, I have lectures. There are the other batches for which I'll be taking the lectures. तुम लोगों के नहीं है ना, उस चीज का दुख है। 150 रुपया वैसे भी मेरे को घर से ही मिलता है। पागल पार, तू क्या बात कर रहा है। Sanika, the concepts are over. That's why I'm not going to take the lecture tomorrow. अकाउंट्स नहीं है, बाकी बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे पता नहीं है। ओ खुशी, तू तो मिलती रहेगी पागल, तू इधर ही रहती है। हा, ते आहेच. लेक्चरची मज्जा वेगळीच असते. स्नेहा, तू, मैं, खुशी, अपन तीनों कहीं बाहर जाएंगे और लोगों को फोटो भेजेंगे। हाँ, इन लोगों को ऐसे जलाएंगे कि हम लोग साथ में घूम सकते हैं, मिल सकते हैं। नक्की नक्की सांगतो। अरे बहुत सारी बैचेस है, किसी न किसी को तो बोलेगा। मैं ललित में रहता है पार्थ, तू भी इधर रहता है क्या? आ जाना अथर्व, आ जाना। हेलो। Okay, just to end the session, because someone was asking, मतलब ये तो कैसे है ना, आई यूज टू राइट, आई डू राइट जब भी ऐसे मन करता है, तो I'll just try to recite if it is possible for me, if I could search it. थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं है। जीवन कश्ती, जीवन मोती, चेहरे की रंगत। तो वो कहते हैं कि चेहरे की रंगत, चेहरे की रंगत मीन्स द एक्सप्रेशंस ऑफ द फेस। चेहरे की रंगत हर पहलू संग बदल जाती है, मन के हर भाव को
मन के हर भाव का प्रतिबिंब कहलाती है। Whatever you feel generally is on your face. इसलिए मैंने लिखा कि चेहरे की रंगत हर पहलू संग बदल जाती है, मन के हर भाव का प्रतिबिंब कहलाती है। हो अपनों से मुलाकात, यू जस्ट ऑब्जर्व इट, हो अपनों से मुलाकात तो मुस्कान आ जाती है। आए विरह की जो बात, मासूमियत छा जाती है। हो अपनों से मुलाकात तो मुस्कान आ जाती है, आए विरह की जो बात तो मासूमियत झलक जाती है। जब जल्लोश का हो समा, यू आर इन द पार्टी मूड एंड ऑल दैट, जब जल्लोश का हो समा तो रौनक छा जाती है। उदासीनता से जो हो जाए भेंट, अफसोस भी झलकाती है। हो जीत का एहसास, हो जीत का जब एहसास तेज से बल खाती है, यू ब्लश, यू नो। और जब हार से हो प्रतिद्वंद, मायूसी में बदल जाती है। गर हो किसी से बैर तो आक्रोश दर्शाती है, लगता गर कोई प्रिय तो प्रेम भी उमटाती है। क्योंकि चेहरे की रंगत हर पहलू संग बदल जाती है, मन के हर भाव का प्रतिबिंब कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। Right? So your facial expressions always work for you, and that's what I've written in this. I'll just try to meet you when you come back. Till that point in time, keep doing great and do a lot of work, lot of hard work, and your hard work is going to pay off and pay off like anything. We'll meet. Thank you.